मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किए हैं, उसका फर्स्ट लेक्चर कल मैंने स्टार्ट किया था और फर्स्ट लेक्चर में हाइड्रोस्टैटिक्स पार्ट्स हमने देखा था। अभी हम लोग देखेंगे प्रेशर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, मीन्स ग्रेविटी के कारण, ये दूसरा लेक्चर है, ग्रेविटी के कारण क्या इफेक्ट होगा, दैट वे वी गोइंग टू सी। ठीक है, तो पैरेलली आप नोट भी करेंगे, है ना, और समझेंगे भी। कोई डाउट होगा तो आप मुझे नोट्स के बाद, नोट्स बनाने के बाद आप पूछ लेंगे। ठीक है, चल देखते हैं। हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर 2, प्रेशर exerted by a fluid, pressure exerted by a fluid। एक फ्लूइड कितना प्रेशर लगाएगा, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये हमारा टॉपिक हुआ, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए फ्लूइड और इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कंसीडर ए वेसल इसमें लिक्विड जो है ये वेट डाउनवर्ड लगा रहा है mg, फ्लूइड जो है वो अपथ्रस्ट किधर लगाएगा, F2 ऊपर, ये डाउनवर्ड F1 लग रहा है, और दिस द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज h। तो कंसीडर ए वेसल कंटेनिंग लिक्विड since the liquid is in equilibrium, since the liquid is in equilibrium, equilibrium का मतलब क्या हुआ, net force acting on the liquid is zero। equilibrium का मतलब हुआ net force acting on the liquid is zero। so every volume element, every volume element of the fluid, every volume element of the fluid is also in equilibrium। so हर एक पार्ट भी इक्विलिब्रियम में होगा। consider one such volume element in the form of a cylindrical column of liquid of height h and area of cross section A, area of cross section A। तो इस पे देखते हैं कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, और हम लोग उस फोर्स के अकॉर्डिंग F1, the force F1 acting vertically downward, which is equal to F1 is equals to P1 into A। ठीक है, दूसरा जो फोर्स लग रहा है इस पे, फोर्स F2 which is equals to P2 into A, acting vertically upward।
थर्ड जो फोर्स लग रहा है वेट mg, W इज इक्वल्स टू mg, वेट ऑफ द सिलिंड्रिकल कॉलम, वेट ऑफ द सिलिंड्रिकल कॉलम और भी कोई वेट तो नहीं लग रहा है, ठीक है, वेट ऑफ द सिलिंड्रिकल कॉलम। सो एट इक्विलिब्रियम हम क्या जानते हैं इक्विलिब्रियम पे, एफ नेट इज इक्वल्स टू जीरो। एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द जीरो, तो जो भी अपवर्ड या डाउनवर्ड फोर्स होंगे, डाउनवर्ड फोर्स F1 प्लस mg माइनस F2 इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। मैंने माइनस F2 यहाँ क्यों लिया, क्योंकि F2 का डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है और डाउनवर्ड ये। आप ये भी लिख सकते हैं F2 माइनस F1 माइनस mg इज इक्वल्स टू जीरो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों सेम है साइन कन्वेंशन। तो हम F2 की जगह क्या लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल्स टू F1 प्लस mg, और F2 के बदले हम यहाँ से वैल्यू नोट करें, F2 इज इक्वल्स टू P2a और F1 इज इक्वल्स टू P1a इज इक्वल्स टू mg, राइट। तो हम इसको इधर ले आते हैं, P2 माइनस P1 इंटू a इज इक्वल्स टू mg। मास ऑफ फ्लूइड को हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ फ्लूइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। सो P2 माइनस P1a इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रो इंटू जी, ठीक है। और फिर वॉल्यूम के लिए, ये सिलिंड्रिकल वेसल है तो इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल vessel is equals to A into H. So we can write P2 minus P1 A into H into rho into G, A cancel. So P2 minus P1 is equals to rho GH. This is the formula for pressure difference at point 1 and 2. और this is 1, this is 2. So P2 माइनस P1 हाइट के कारण जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो कितना होगा, रो इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, G acceleration due to gravity and H is height, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन, इसके कारण प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला, राइट। तो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड एच हाइट पे। अगर हाइट हम बढ़ाएंगे तो हम लिख सकते हैं दैट प्रेशर डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। अगर मुझे ग्राफ बनाना हो, अगर ये दिख रहा है यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हाइट के कारण P2 माइनस P1, दिस इज स्ट्रिप लाइन, ठीक है, हाइट के कारण ये स्ट्रिप लाइन है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। दिस इज द नोट करेंगे इसको। देन वी विल सी पास्कल्स लॉ।
नेक्स्ट हम देखते हैं पास्कल्स लॉ क्या होता है। पास्कल्स लॉ, Pascal law states a liquid exert equal pressure in all directions. A liquid exert equal pressure in all directions. In all directions. And second, if the pressure in an enclosed fluid, the pressure in an enclosed fluid is changed at particular point, changed at particular point, the change is transmitted to every point of the fluid. The change is transmitted to every point of fluid. The change is transmitted to every point of the fluid and to the walls of container. Without diminishing the magnitude. Application of Pascal's law. Hydraulic brakes, hydraulic jacks, hydrauलिक लिफ्ट, सब एक ही प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। मैं बताऊँ, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ठीक है। इसमें हम हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल देखेंगे कि कैसे वर्क कर रहा है। सारे एक ही प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ स्टेट्स अ लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। मतलब लिक्विड जो है किसी भी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर लगाएगा, ऐसा नहीं कि प्रेशर का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। दूसरा स्टेट, द प्रेशर इन एन इनक्लोज्ड फ्लूइड चेंज दैट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज हो रहा है तो वो हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिटेड होगा विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ हमारे पास क्या क्या है, हाइड्रोलिक जैक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इसमें हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक्स का डिटेल, हाइड्रोलिक लिफ्ट का डिटेल स्टडी करेंगे। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है, जैसे कहीं भी आप जाएंगे कार वॉशिंग या सर्विस सेंटर में, तो वो हाइड्रोलिक लिफ्ट के बेसिस पे ही कार को हम लिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो वो किस प्रिंसिपल पे कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे। या तो वॉशिंग स्टेशन में भी आप कार्स के या हेवी व्हीकल के वॉशिंग स्टेशन में देखिएगा कि अगर उनको कुछ काम करना होता है तो उसको लिफ्ट करते हैं। तो लिफ्ट करने के लिए बेसिकली वी आर यूजिंग हाइड्रोलिक लिफ्ट।
पहले हम इसको बनाते हैं। ड्रॉ करेंगे पैरेलली। देखिए ये क्रॉस सेक्शन है जिसमें फ्लूइड रखा हुआ है, और हम इसके थ्रू इस कार को लिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन का एरिया A1 है, यहाँ प्रेशर P लग रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू F1 है, सो F1 इज इक्वल्स टू P इंटू A। ठीक है, यही फ्लूइड जब इसको प्रेस करेंगे तो ये फ्लूइड यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेगा, और ये किस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम प्रेशर P2 P लिख सकते हैं, दैट इज F1 बाय A2, राइट। क्योंकि यही प्रेशर अप्लाई किया है तो प्रेशर दोनों जगह पे जो होगा हमारा P इज इक्वल्स टू F1 बाय A और P इज इक्वल्स टू F1 बाय A2, राइट। अब अगर हम देख रहे हैं कि दोनों प्रेशर इक्वली ट्रांसमिटेड इन सेम डायरेक्शन, तो हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम पास्कल्स लॉ pressure transmitted equally in all directions, so we can say this F1 by A is equals F1 by A1 is equals to F2 by A2, F2 by A2, or that is also F2 by A2। तो हम जो F2 लगेगा, ये F2 कितना हो जाएगा मेरा, द वैल्यू ऑफ अपवर्ड फोर्स F2 is equals to F1 into A2 by A1। This is the upward force which are applying on this car to lift it up। अब आप देखिए F2 किस पे डिपेंड कर रहा है, F2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 और F2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A1। A1 का एरिया जितना कम होगा F2 हम उतना ज़्यादा लगाएंगे, और A2 का एरिया जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो A2 इसीलिए हम यहाँ पे क्या बनाए, वाइडर बनाया, क्योंकि फोर्स जो अपवर्ड फोर्स होगा वो A2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और A1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इस ट्यूब का, इस A1 का एरिया हम जितना कम रखेंगे, जितना कम करेंगे हम फोर्स उतना ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और A2 जितना बड़ा करेंगे, जैसे मुझे ट्रक को भी लिफ्ट करना होगा, तो मुझे अगर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, इस A1 को हम जितना कम रखेंगे और इस A2 को जितना बड़ा करेंगे, वी कैन इजिली लिफ्ट दैट हेवी टू हेवी व्हीकल, राइट। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ Pascal's law, application of Pascal law. Hydraulic lift works on the basis of application of Pascal's law। और Pascal's law क्या है, सिंस यहाँ पे जैसे ही इस फ्लूइड पे हम प्रेशर लगा रहे हैं, दैट प्रेशर ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, तो दोनों प्रेशर मेरे पास क्या हो जाएगा, P और P दोनों सेम होगा। तो P को हम F1 by A1 और P को F2 by A2। सिंस बोथ प्रेशर आर सेम, तो P
इसको आप P1 P2 भी लिख सकते हैं और बाद में आप लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P। तो F1 बाई A1 F2 बाई A2 हमें अपवर्ड फोर्स, चूंकि यही फोर्स इसको लिफ्ट कर रहा है, तो F2 इज इक्वल टू ये, और दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। ठीक है, नोट करेंगे इसको। दिस फिनिशेस योर हाइड्रोस्टैटिक्स पार्ट। यहाँ पे हमारा हाइड्रोस्टैटिक का सेक्शन जो है वो खत्म हो गया। नाउ वी विल मूव टू हाइड्रोडायनामिक्स पार्ट। हाइड्रोडायनामिक्स पार्ट क्या हुआ? फ्लूइड का वो प्रॉपर्टी जिसमें अब फ्लूइड, अभी तक फ्लूइड क्या था? रेस्ट में था। हाइड्रोस्टैटिक, पूरे हाइड्रोस्टैटिक में जो भी हम स्टडी किए हैं उन सब में फ्लूइड क्या था? रेस्ट में था। बट हाइड्रोडायनामिक्स में क्या होगा? फ्लूइड हमारा मोशन में होगा। तो अब हम फ्लूइड्स के मोशन को स्टडी करेंगे एंड दैट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ हाइड्रोडायनामिक्स, राइट? नोट कर लीजिए इसको। चलिए, now we will comes in hydrodynamics. Fluids which are in motion. Fluids which are in motion. Hydrostatics क्या हुआ? Fluids which are in rest. Hydrodynamics क्या हुआ? Fluids which are in motion. When a fluid moves in such a way there are relative motion among the fluid particles. There are relative motion among the fluid particles the fluid is said to be flowing. The fluid is said to be flowing. ठीक है, यहाँ पे भी रिलेटिव मोशन होगा फ्लूइड्स के लेयर्स के बीच, तो फ्लूइड हमारा क्या कहलाएगा? फ्लोइंग या मूविंग। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो कितने टाइप का होता है? दैट वी विल सी हियर। द फर्स्ट वन इज स्टेडी flow. The first one is steady flow. Define करते हैं। Steady flow is defined as that type of flow in which the fluid velocity at a point do not change with time. Do not change with time. The fluid particle may have
the fluid particle may have different velocity at some other point. Different velocity at some other point. ठीक है, तो स्टेडी फ्लो क्या है? स्टेडी फ्लो इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ फ्लो इन विच द फ्लूइड वेलोसिटी एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज विद टाइम. टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. फ्लूइड का वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. द फ्लूइड पार्टिकल मे हैव डिफरेंट वेलोसिटी सम अदर पॉइंट. मतलब फ्लूइड का वेलोसिटी दूसरा हो सकता है बट किसी टाइम पे वो चेंज नहीं होगा. 11:30 दैट इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो. The fluid velocity which is do not change with time, but fluid particle may have different velocity some other point. कोई other point पे velocity अलग हो सकता है but ऐसा नहीं कि वो velocity time के साथ change हो जाएगा. ठीक है, that is known as steady flow. That is known as steady flow. In steady flow, all the particles passing through a given point follow the same path and a unique line of flow forms. This line or path is called streamline. This line or path is called streamline. This line or path is called streamline. ठीक है, मतलब जो यूनिक फ्लो होगा, एक in steady flow all the particles passing through a given point follow the same path and unique line जो होगा इसी को फ्लो फॉर्म्स करेंगे और इसी लाइन और पाथ को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन. The line or path is called streamline. Streamline do not intersect each other. 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 If streamline intersect each other, if a streamline intersect each other at the point of intersection, streamline intersect each other, they can move in either direction and the flow will be not steady and the flow will be not steady. अगर वो मूव किए तो किसी डायरेक्शन में मूव करेंगे और वो हमारा फ्लो स्टेडी फ्लो के अंदर नहीं आएगा. ठीक है, अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो. अगर इंटरसेक्ट नहीं करते तो सब सेम लाइन के लोग सेम डायरेक्शन सेम पाथ पर ट्रेवल करेंगे एंड दिस इज स्टेडी फ्लो. ठीक है, दूसरा हम लोग नोट करेंगे इसको. सेकंड हम लोग देखेंगे लैमिनार और टर्बुलेंट.
सेकेंड जो मेरे पास होगा वो लैमिनार और टर्बुलेंट होगा। आगे चल के इसको मैथमेटिकली भी हम लोग डिफाइन करेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे इस फ्लूइड को हम लोग डिफाइन करते हैं, कौन सा स्ट्रीमलाइन होगा, कौन सा टर्बुलेंट होगा। ये तो बेसिक इसका डेफिनेशन हो स्ट्रीमलाइन का और लैमिनार का। laminar and turbulent flow. Laminar and turbulent flow. Laminar flow is the flow in which laminar flow is the flow in which fluid particles move along well-defined streamlines which are straight and parallel. In laminar flow, the velocity at different points in the fluid may have different magnitude. But their direction are parallel. Particles move in laminar or layers. Particles move in laminar or layers sliding smoothly over adjacent layers. Turbulent flow. It is an irregular flow. In which the particles move in zigzag way, due to which
eddy formation takes place. Eddy formation takes place which are responsible for high energy loss. Which are responsible for high energy loss. ठीक, तो laminar flow और turbulent flow. Laminar flow is the flow in which the fluid particles move along well-defined streamlines which are straight and parallel. मतलब जो streamline direction उसका fix होगा straight or parallel, that is laminar flow. In laminar flow, the velocity at different point in the fluid may have different magnitude, but their direction will be parallel. Different point का magnitude different हो सकता है, but उनका direction क्या होगा? Parallel होगा. Particles move in laminar और layers स्लाइडिंग स्मूथली ओवर एडजेसेंट लेयर. आपको ऐसा लगेगा कि वो एक दूसरे के लेयर्स के ऊपर स्लाइड हो रहे हैं. ठीक है. टर्बुलेंट फ्लो, इट इज इरेगुलर फ्लो विच इट मूव इन जिगजैग मैनर. जिगजैग मैनर मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं हुआ, ड्यू टू विच इट फॉर्म्स एडी फॉर्मेशन और मोस्ट ऑफ द एनर्जी विल लॉस इन दिस केस. टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है, नोट करेंगे इसको. देन कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल. नेक्स्ट लिखते हैं. Incompressible flow the density of fluid varies from point to point. The density of fluid varies from point to point. That is the fluid density is not constant. Fluid density is not constant. Whereas in an incompressible flow, the density of fluid remains uniform throughout. The density of fluid remains uniform throughout. Liquids are partially incompressible. Liquids are practically incompressible. While gases are highly compressible.
ठीक है। In compressible flow, the density of fluid varies from point to point. Compressible मतलब क्या हुआ, जिसको compress कर सके तो उसमें density क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि हम compress कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज होगा। Whereas incompressible, जिसको compress नहीं कर सके, the density of fluid remains constant. Liquid is practically incompressible मतलब liquid में density, while gases are highly compressible मतलब गैसेस का डेंसिटी कंप्रेस करने से चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज होगा तो, बट लिक्विड्स आर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो ये हमारा कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा। नेक्स्ट रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। Rotational and irrotational flow. Rotational flow is the flow in which the fluid particles while flowing along different path lines also rotate about their own axis. In irrotational flow, the particles do not rotate about their own axis. Particles do not rotate about their own axis. That is irrotational flow. ठीक है, दैट इज इररोटेशनल फ्लो। तो ये सारे नोट्स कर लेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो। पहले देखे स्टेडी फ्लो, लैमिनार, टर्बुलेंट, compressible and incompressible, rotational and irrotational. Rotational flow is the flow in which fluid particles while flowing along different path lines also rotate about their own axis. Irrotational flow, fluid तो flow होगा बट वो rotate नहीं करेगा, that is known as irrotational flow.